All right. So I'm recording this. You can see anytime you want. Okay. It's available to you. All right. So do you remember anything about integration by parts? Integration by parts. Okay. So if you have two functions which are different and are getting multiplied, for example, u multiply by v, okay, and you have to integrate them, then this rule is to be used. So these are two different functions, Hmm. and you integrate like you have product rule and derivative for two functions. Yes, sir. If you do a derivative of fx multiplied by gx, so this is f dash x gx plus g dash x fx. Product rule. ठीक है. This was for derivative. If you do now integration, this was derivative. Hmm. What if fx and gx come like this? Instead of taking derivative, you are asked to do a integral calculus. So the rule for this is, if we talk about just a simple rule, then it is the integration of the first function. Okay. So what you do is you pick up the first function. So integration of first function, ये करनी पड़ेगी. ठीक है. Okay. The integration of the first function, and then what you do is you multiply it with the second function directly. Don't do anything to the second function. Okay. Okay. So जो भी आप फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करोगे इन दोनों में से, वो ऐसा सिलेक्ट करना कि उसकी इंटीग्रेशन आराम से हो जाए. डोंट सिलेक्ट अ टफर फंक्शन, ट्राई एंड सिलेक्ट अ easier function. अच्छा. Okay. Minus the integral of first. Now integral of the first multiply by derivative of second. Hmm. Or write second here. Derivative of second. अच्छा. Okay. So this is called integration by parts. Any doubts Okay. in your mind? नहीं. So this is used. This is being used like a product. When these two are getting multiplied, these two are also getting multiplied. Product. Okay. 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 So you will have to solve integration in both the cases. Hmm. Right. So you can see there is an integral which you need to calculate, and there is another integral which you need to calculate. This is integral of first multiply by d of dx. So मतलब ये भी पूरा integral solve करना पड़ेगा. Yes, sir. So let's pick up a very simple example. Okay. So for example, if you're given, इसमें दिक्कतें आती है. How do you select the first function or the second function? Okay. That's all. Okay. So if you have to integrate, for example, x raised to power n ex. Now randomly if you try to do it, so what you do, you select, now say this is your first function. Assume
that you go for hit and trial. So this Okay. is integration of the first function. मैंने इसका नाम फर्स्ट रख लिया. Hmm. Multiply by the second function minus integration of first function multiply by derivative of first function. First function का derivative वापस यही आ गया, हाँ. right? So dx. If you notice, these two actually are same. हाँ. Yes, sir. Right? There is no difference between these two. Hmm. And let me do a reverse. Let me say the integral of e raised to power x. Now e raised to power x is being taken as the first function multiplied by the second function minus integral of the first. अब first function तो मेरा क्या है? E raised to power x Yes, sir. and derivative of the second. Derivative of x raised to power n will be n x n minus 1 dx. Hmm. Now this is getting difficult. इसमें at least we could take it on the left hand side and make it 2i. Now this Yes, one sir. is getting harder. Hmm. E raised to power x, x raised to power n dx. ये तो सेम ही आ गया लेफ्ट हैंड साइड जैसे, तो कट जाएगा. Correct. और वैसे भी सो दिस वन इज बिट, ये तो इसका इंटीग्रल निकल गया, सॉरी. ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड द इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर एक्स. ये आ गया, सॉल्व होके ये आ गया ई एक्स. तो ये दिस इज गोइंग नोवेयर, Hmm. है ना. है तो वही, मतलब एक्स रेज टू पावर, बट फर्स्ट फंक्शन की सिलेक्शन ऊपर देखो. ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है. यहाँ पे उल्टा कर दिया. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है. Okay. Reverse, right? So if you see, what will you do with this now? What will you do? This is difficult to integrate now. Yes, sir. हाँ. So you can select anyone as a first function or any one of the two which are getting multiplied as first or second. कोई भी चुन सकते हो, बट सिलेक्शन वैसी करनी है जिससे कि आपका जो इंटीग्रेशन है वो इजी हो जाए. Hmm. एक में मुश्किल होता जाएगा, एक में इजी होता Easy. जाएगा. That is a difference. Okay. Okay, let's apply some rules on this. Okay, generally you will see that these functions which are x raised to power n and all, depending on उनके साथ कौन आता है. कई जगह पे अभी x raised to power n को मैंने लिया तो it became hard, Hmm. but कई जगह पे it will be easy. अच्छा. Okay, so let's integrate, for example, simplest possible product तो एक algebraic और एक trigonometric हो गया. Hmm. Okay, assume you don't understand first, second. You only know how to integrate. And you know the rule कि first और second का कुछ होता है. तो you write कि भाई my x is my first function. You don't apply yourself. You just say blindly, okay, ले लेते हैं ये. ठीक है. Okay, so this is the way you solve. So then what happens? You will write x, first function का integral, Hmm. multiply by the second function, minus whole integral of क्या है ऊपर, again the first function, right? So this is the integral of first function multiply by the derivative of the second function. But what is the derivative of second function? Minus sin x. अच्छा. ठीक है. Okay, so let's say if you were to solve this and derivative of this function will be, एक second यार.
So you have taken x as your first function. So this became x dx in cos x minus and ओके सो आप बेसिकली ये कर रहे हो, ये तो आप इंटीग्रेट कर ही रहे हो. एक सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपरली बिकॉज इसमें दिख नहीं रहा. रूल इज इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट हम्म. मल्टीप्लाई बाय, तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट यस सर. मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. ठीक है. ठीक है. एंड दिस इज नाउ होल इंटीग्रल. हम्म. तो ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये साइन ये दिखा रहा है कि पहले फर्स्ट को इंटीग्रेट कर लो, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करो और साथ में dx लिखो. मतलब इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट निकालो और ये फिर पूरा इंटीग्रेट होगा. अच्छा. तो ये मैं इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट लिखा है मैंने. सो लेट मी राइट हाँ. इट इन अ मैनर सो दैट इट्स easy. So I'm going to write it in a manner that's easy. So this is integration of first and then whole integration. सारे की भी इंटीग्रेशन करनी है. अच्छा. ठीक है. ये था ना इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट हम्म. multiply by derivative of second. Okay, so let's say this is equal to x cos x. अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो we can do it straight away, right? This is how this is x square by 2 multiply by cos x minus whole integral. इसका इंटीग्रेशन हो गया x square by 2 into minus sin x dx. अच्छा. Right? So this is equal to x square by 2 cos x plus x square by 2 sin x dx. Sorry. Now see, निकालना तो ये था x cos dx. This is going nowhere again. ये तो x की पावर और बढ़ गई. एक्स की पावर की बढ़ रही है. तो मतलब this is going nowhere. हम्म. So wrong selection of the function will result in trouble. Now let's do one thing. For the sake of comparison, let's reverse this. Let's say the first function is cos x. The second function is x. हम्म. ठीक है. Now let me apply the same rule. Let's compare. Integral of first function. Integral of first function multiply by the second function minus whole integral of first function multiply by derivative of the second function. 1 हो गया इसका डेरिवेटिव, यस सर. ये सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव है इनटू dx. ठीक है. ठीक है. ये cos x है, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो क्या आएगा? माइनस साइन. ठीक है. हम्म. एंड दिस विल अगेन बी, ये 1 ही रह गया सिर्फ, तो क्या बन गया ये? सॉरी, दिस इज साइन एक्स इंटू एक्स. हम्म. सो एक्स साइन एक्स आ गया. हाँ. यस सर. आ गया. इसमें देखो क्या हो रहा था. तो इसका डेरिवेटिव जो था वो 1 बन जाता ना, एक्स की पावर कम हो जाती. हम्म.
जबकि यहाँ पे अगर मैं इस x को इंटीग्रेशन के लिए यूज करता हूँ तो x की पावर और बड़ी हो जाती है. करेक्ट. सो जनरली यू विल सी, डिपेंडिंग, अगर x के साथ मैं log x लिख दूं तो सिचुएशन बदल जाएगी. तो आपको जो अभी क्रक्स आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि द सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज द key to solving these problems, product problems. Okay. Okay, and gradually we will see what are the rules to select the first function and the second function. But first of all, from technique point of view, were you able to understand this is one integration multiplied by derivative of second and then total integral? Yes, sir. ये समझ में आया? हाँ, आगे. Okay. So let me give you one question and you try to apply the technique. ठीक है. ओके, एंड ऑलवेज सी किसका मतलब डेरिवेटिव निकालना आसान है, किसका इंटीग्रल. तो थोड़ा सा एक लॉजिक डेवलप हो जाएगा. लेट्स से यू आर गिवन एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स. नाउ यू ट्राई टू सॉल्व दिस. पहले सोचो थोड़ा सा कि एज ए प्रोग्रेस इनटू द क्वेश्चन, what will make my life easy? Do I want to increase the power of x square by integrating it, or would I like to decrease it by taking derivative of it? तो वो जो राइट साइड में डेरिवेटिव आता है, और इंटीग्रेशन भी आसानी होनी चाहिए. यू शुड नॉट सिलेक्ट अ फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन निकालना भी ऐसा फर्स्ट फंक्शन चल लो. अब इस केस के अंदर इंटीग्रल ऑफ एक्स भी उतना इजी था, कॉस एक्स भी उतना ही इजी होता. इजी था. हाँ. तो वो फाइट नहीं थी. लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एक्स का फायदा हो गया. यस सर. यहाँ पे डेरिवेटिव का कोई फायदा नहीं हो रहा फायदा नहीं है. है ना. सो यू हैव टू चूज दिस कि पहले लॉजिक लगा के देखो कि फर्स्ट फंक्शन में किसका इंटीग्रल आसान है. अगर दोनों आसान है तो फिर देखो कि कैसे आपको वो डेरिवेटिव जो है वो डिसाइड करेगा. यहाँ पे जो डेरिवेटिव आता है वो डेरिवेटिव और मुश्किलें बढ़ाता है या घटाता है. डज दिस डेरिवेटिव इंक्रीज योर प्रॉब्लम और डिक्रीज योर प्रॉब्लम? अच्छा. एक बार लगा के देखो. डोंट वरी, हम्म. जस्ट अप्लाई योरसेल्फ विद योर हैंड्स. ओनली देन यू विल लर्न. यू कैन सी अबव ऊपर सॉल्व है. वन अ बैड अप्रोच, वन अ गुड अप्रोच.
तो बोर्ड नहीं चल रहा। ठीक है, टेल मी योर डाउट। तो बोर्ड नहीं चल रहा था, अब चला। बोर्ड नहीं चल रहा? फिर अभी तो चल रहा था, ठीक ठाक चल अब रहा चल है। गया, अब चल गया। लोडिंग ही आ गया था। दिक्कत हो गई। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकंड फंक्शन। हम्म, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकंड। ठीक है, नाउ यू हैव टू डू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट अगेन। ये देख लो, मैंने लिखा हुआ है, दो इंटीग्रेशन के साइन है, एक बड़ा लगा दिया तो अंदर पहले इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट भी करना है आपको। चलो, ये सॉल्व हो गया आपका एक। सो दिस इज टेकन केयर ऑफ। माइनस, ठीक तो है, बोर्ड ही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या। हाँ जी, टेल मी डिफिकल्टी। तो बोर्ड ही नहीं चल रहा। बोर्ड तो चल रहा है यार, ये देखो, तो वर्किंग बहुत फाइन, अटक रहा है, मतलब इससे जूम में दिक्कत हो रही है मुझे। फर्स्ट क्लास चल रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे तो। ये देखो, बिल्कुल लाइनों आई को एम, देख के घुमा रहा है बिल्कुल बार बार। मेरा तो यार ठीक चल रहा है, देखो ये सेम बोर्ड राइट। और किसी बोर्ड में भी मेरा बढ़िया चल रहा है, दूसरे बोर्ड। आई एम एबल टू राइट वेरी स्मूथली, लुक एट दिस। तो जूम वो ठीक कभी है, कभी एक तरफ से नहीं, ऐसे नहीं है। जैसे पिछली बार आपका नहीं चल रहा था और मेरा चल रहा था। देखो आई कैन राइट एनीथिंग। हाँ, वही कभी कभी एक बंदे को इश्यू देता है। अब थोड़ा सा चला। यू आर डूइंग डेरिवेटिव ऑफ सेकंड,
ओके, देन राइट डी बाई डी एक्स। हाँ ठीक है, 2x आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, दिस इज ओके। सो यू आर डूइंग डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड। ये बेटर मेथड है लिखने का, इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग हो गई ना। हम्म ठीक है, गो अहेड एंड राइट इट। यू वांट टू मेक अ ब्रैकेट? इंटीग्रेशन का ठीक लगाना है, है। मैं बना देता हूँ, कोई नहीं, ये लो मैंने बना दिया, अब लिखो द इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट अगेन। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल सही लिखा है। हम्म, ठीक है, सो दिस इज इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट। सही है। सो देखो, योर ऑल्दो कुछ डायरेक्ट आया नहीं, बट हम्म, यू कैन अगेन अप्लाई द इसको सेम दोबारा रूल टू करेंगे। दिस। हाँ। यू कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल टू दिस। यस सर। लगाओ। तो you have definitely been able to reduce the power of x, यस सर। so which is a big advantage. हम्म, So you're doing derivative integral, सही है, वन ही हो जाएगा ये, एंड होल इंटीग्रल, सबका इंटीग्रल भी होगा ना। ये तो इंटीग्रल ऑफ हाँ फर्स्ट है, वही व्हाट अबाउट वही। यस, अब सही लिखा है, बढ़िया, नीट जॉब डन, यस। नाइस। हाँ, इसका तो ई एक्स ही हो गया। आ गया। हम्म, तीन टर्म आने चाहिए ना। पूरा लिख देता हूँ। अच्छा वो, अच्छा वो एक्स स्क्वायर ई एक्स भी है साथ में, ओके, ये आपने अलग से निकाल लिया, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर ई एक्स, बढ़िया, गुड है। All right, great job done. यस। Okay, so let's see how to integrate
x tan inverse x dx. ठीक है. So I will go with the, because x का जो है, अब ऊपर से लर्निंग ये रही कि x को ले लो अगर एज अ फर्स्ट वन, तो ये कर सकते हैं कि हम वी कैन राइट इट एज x dx इंटू tan इनवर्स x माइनस x dx डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x dx. ठीक है. सो लेट्स सी इसमें क्या होता है. सो दिस बिकम्स x स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस, इसका इंटीग्रल इज वेरी सिंपल, x स्क्वायर बाय 2, यस सर. इसका इंटीग्रल डेरिवेटिव इज 1/1 प्लस x स्क्वायर, राइट, dx. So this becomes x square by 2 tan inverse x minus x square upon 1 plus x square 2. Now what? Has it become easier or difficult? कॉम्प्लेक्स नहीं, ये इस इजी अब तो सही है. बेसिकली इसका इंटीग्रल रह गया ना. हाँ. ये तो हो गया खत्म. यस सर. ना, और ये जो है कोई प्रोडक्ट है नहीं वैसे अपने आप में. हम्म. काश ऊपर x होता तो नीचे का डेरिवेटिव x ही होता है, पर वो है नहीं. बट दिस इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. So can I put x square is equal to, say x is equal to tan square theta. ठीक है. So I will write this as uh, x equal to tan theta अगर मैं डालता हूँ तो this will become, so what I mean is x square is equal to tan theta. So dx is equal to secant square theta d theta. So this becomes tan square theta. dx is secant square theta upon 1 plus tan square theta. अच्छा. Right. So this is how much? This is secant square theta. हम्म. So tan square theta, secant square theta to secant square theta. So this is tan theta. यस सर. So ये आ गया x by 2 हम्म. because x is equal to tan theta. tan थीटा. And this is tan inverse x by 2. Got it? यस सर. तो ये वाली फॉर्म आसान थी सॉल्व करना, वर नॉट वेरी डिफिकल्ट. यस सर. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म थी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. हम्म. Okay. So let's say you have to integrate only tan inverse x. Now you try this. Remember, if it is a single function जिसका कोई direct answer नहीं है, the second function is automatically 1. हम्म. Now you solve this. तो second function या first function, वन ले लो या इसको second ले लो, इसे first ले लो, it's your choice. But अगर single tan inverse x ही लिख के आपको दे दिया, right? You may think इसमें दो multiplication तो है नहीं, तो I will not apply integration by parts. But it is into one, right? Slightly special. हम्म.
ओके, नाउ यू ट्राई दिस। देखो, टेन इनवर्स का डायरेक्टली तो निकलना नहीं है कुछ भी। नहीं। मेरे ख्याल से तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी कि टेन इनवर्स को इंटीग्रल में ना डाला जाए, क्योंकि इसका इंटीग्रल मालूम ही नहीं है। तो ट्रीट दिस एज अ सेकेंड फंक्शन ओनली। इसका डेरिवेटिव निकालना बड़ा आसान है, टेन इनवर्स एक्स का। हम्म। सेकेंड एक्सप्रेशन में तो डेरिवेटिव ही आता है ना, यस सर। फॉर्मूले में, ये वाला। हम्म। तो टेक tan इनवर्स एज अ सेकेंड फंक्शन एंड वन एज द फर्स्ट फंक्शन। सी। ठीक है, आई थिंक योर टेक्निक इज फाइन नाउ। इसको सेकेंड ही लो ना। tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट लेने का कोई फायदा नहीं है, हम्म। बिकॉज tan इनवर्स का इंटीग्रल तो पता ही नहीं है ना, तो इंटीग्रल में तो उसे डालना ही नहीं किसी भी हालत में। यस सर।
व्हाट इज दिस? tan अच्छा, इनवर्स x पर। इसका इंटीग्रल तो नहीं लेना था ना, वन इज योर इंटीग्रल, दिस वाज अ सेकेंड फंक्शन, ओ अच्छा। उल्टा कर दिया। इसका तो इंटीग्रल निकाल ही नहीं सकते ना, हम्म। तो इसको छेड़े क्यों इसको? सो दिस इज अ सेकेंड फंक्शन, एन इंटीग्रल ऑफ व्हाट इज दिस? 4। नहीं नहीं, ये मैंने फोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। ये आपने नीचे लिखा हुआ है ना इधर। नहीं नहीं, फोर मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर फोर। आपने नीचे फिर कौन सा नंबर लिखा नहीं हुआ नहीं, है? ये मैंने लिखा था पहले वो सेकेंड फंक्शन। अच्छा। So just keep it. Yeah, this is fine. Now you can find integral of dx very easily. 1 dx x. इसको भी चेंज कर लो। ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x²। 1x²। तो तुमने यार डेरिवेटिव की कोई खास तुम्हें प्रैक्टिस नहीं हो रखी। 1 + x²। नहीं, मैं लिख ही रहा था, मैंने लिख ओके। दिया था 1।
Oh, it got cancelled. Yes, sir. Okay. But where is the integration of this? X होती है इसकी इंटीग्रेशन dx की. ये वाला इंटीग्रल तो x है. वो रह गया है इसमें।
Okay, so you put 2x x square is equal to, ठीक है, good. Okay, all right. So there is a form in this, okay, Okay. which is, let me use a new page now, okay, because this is, बोर्ड खुल गया हमारा. तो खुल चुका. ये क्या आ रहा है? Okay, anyway. Okay, so let me just, all right. So let's go to the next page. Okay, so the next page is, so अगर आपके पास, if you have a question of the form which is e raised to power x fx plus f dash x, okay, this is a special case जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव ही फंक्शन के साथ लिखा होता है, हम्म. right? And these are special cases of, okay, the e raised to power x. So you don't need to solve them completely. So this is a special, आपको ढूंढना पड़ेगा कि डेरिवेटिव उसके अंदर अवेलेबल है, राइट? सो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है, अगर आप इस ब्रैकेट को खोल लोगे, इफ यू ओपन दिस एंड ट्रीट दिस एज अ सेकेंड फंक्शन, तो एफ डैश एक्स भी निकालना ही पड़ेगा, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसके हम्म. साथ, ई एक्स एफ डैश एक्स के साथ. इफ यू ट्रीट दिस एंड दिस एंड ट्राई टू सॉल्व इट सेपरेटली, मतलब मैं इसको अगर ब्रैकेट को खोल लूं तो ये ई एक्स एफ एक्स डी एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स ऐसे होगा ना. हम्म. इफ यू ओपन दिस अप, सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या आएगा? इसके सेकेंड एक्सप्रेशन में, अज्यूमिंग दिस टू बी द सेकेंड फंक्शन, इसका सेकेंड एक्सप्रेशन होगा इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रल ऑफ ई एक्स. हम्म. सेकेंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट नहीं लिखा मैंने, हम्म. मैं फर्स्ट भी लिख सकता हूं वैसे, ई एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स. इंटीग्रल सिर्फ इसी का हो रहा है. तो ये क्या है? सेकेंड एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? देखो, ये सेम ही रहा. हाँ. दिस विल बिकम एफ डैश एक्स ई एक्स डी एक्स. हम्म. इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, सिर्फ हाँ. फर्स्ट पार्ट की. एक सेकेंड पार्ट भी है. डू यू सी दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड? यस सर. तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो यही आ जाता है. Direct. So if you see a question where it is integral of ex and sin x plus cos x हम्म. dx, this is the way you're doing it. Do you see that the derivative of sin x is available inside it? The derivative of sin x, which is fx, the f dash x is available in it. हम्म. इसको यस सर. सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर है
ex sin x dx. And then, of course, you can apply your rule. अच्छा। सॉरी, इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो इंटीग्रल साइन हियर, क्योंकि ई एक्स का जो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये वाला, हम्म। ये तो ई एक्स ही हो जाएगा. यस सर। तो ई एक्स इंटू एफ एक्स, यू डोंट नीड टू राइट द, यही आंसर है डायरेक्ट. ठीक है। Right? So let's do one question to get a grip on what this is all about. Okay? But you have to decide, like for example, e raised to power x, and this is, for example, x plus, so let me just make it simple. So this is log x, and this is 1 by x. ठीक है? So can you see the derivative of log x is available inside? हाँ यस सर। So straight away write the answer as answer. Why? Because if you have an integration of ex, some function whose derivative is getting added with it, ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, ऐड हो रहा है उसके अंदर, तो वो आंसर जो आता है वो यही आ जाता है. अच्छा। गॉट इट? यस सर। ई वालों के केस के अंदर एप्लीकेबल है बेसिकली. ओके, हम्म। सो इजी. Okay, so let's say we are trying to solve. So today, if you see a lot of emphasis on exponential, and okay, so let me ask you. So it is log x, okay, and you have to find log x whole square. How will you solve this? सिंगल फंक्शन नजर आ रहा है, बट सिंगल नहीं, इनटू वन करना है. हाँ। लॉग एक्स स्क्वायर का तो कोई आंसर पता भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन में बिल्कुल नहीं आएगा ये. डेरिवेटिव वाली साइड पे लेना है इसको. अच्छा। तो ट्रीट log x whole square as a second function and 1 as the first function. करो जरा, try it. Give it a shot. Now you know it appears to be only one, but actually these are two functions.
समझ आ गया ना? यू हैव टू डू दिस. हम्म, दिस इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म, ये वाला नहीं, ई रेस टू पावर एक्स नहीं है, बट ये वो tan इनवर्स एक्स जैसा है, जिसमें tan इनवर्स एक्स वाज द सेकंड फंक्शन. तो इनटू वन करना है. टेल मी व्हाट्स योर डिफिकल्टी. सही है. log x का तो इंटीग्रल निकलना भी नहीं था, वन का तो फिर भी निकल जाएगा. राइट. dx. गुड. ओके, सो इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स इज एक्स. इसका इंटीग्रल x होता है. हाँ, सीधा x ही लिख दो यार इसको. और तुमने इसका चेन रूल नहीं लगाया डेरिवेटिव का. टू log x और log x का डेरिवेटिव मिसिंग है. द डेरिवेटिव ऑफ log x होल स्क्वायर, log x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव शुड हैव बीन टू log x मल्टीप्लाई में फिर log का वन बाय एक्स. पहले x रेस टू पावर n, फिर चेन रूल से log x का भी निकालना था, तो योर डेरिवेटिव इज ऑल्सो रॉन्ग. वो तो नहीं सो कट गया लेकिन किससे? एक्स से। मुझे दिखा नहीं कहीं पे. ओके, ठीक है. इफ दैट इज सो फाइन. सो सो यू डोंट नीड टू राइट दिस, राइट? ये तो गया ना. यस ठीक है. टू log x dx. ओके.
दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल, या इंटीग्रल का साइन नहीं है। जी होल इंटीग्रल तो बचा हुआ है ना। सो व्हेन यू टेक डेरिवेटिव 2 log x 1 by x और एक इंटीग्रल, ठीक है, 2 log x। अब इसको भी ट्रीट दिस एज वन फंक्शन, एज इफ दिस इज इनटू वन। दोबारा वही लगाओ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। अगेन डू द सेम थिंग, जो ऊपर करा है दोबारा लगेगा। So this is your second function again. Got it? ये मैंने ऊपर कर चुका है प्रीवियस Something क्वेश्चन similar पे। has been done. ठीक है, बट समझ आ गया, वही मैंने इसलिए उसको 1 dx लिखा था। राइट? ये dx हो गया ना यहाँ पे। वही करा था मैंने। हाँ, तो अब ये दोबारा से you have to apply the product rule. Again you have to apply the product. So you may have to apply product rule many times in the same question, right? Now what you are supposed to do, okay? Note, these are the questions you will solve now as your assignment for tomorrow. Not too many. So one is ex. Okay, this is your assignment for tomorrow. We will discuss these. I've already sent you practice for it. I think I've already sent you the practice. Yes, sir. Integration key. Okay, let me send you the practice for derivative also. हाँ, डिफरेंशिएशन का टेस्ट भेजा हुआ है मैंने, सॉरी आपको। ठीक है। Okay, so you do this question for tomorrow so that you remain in touch. E raised to power x cot x plus log of sin x. This is one. Okay, let me give you one more so that at least you are in touch with the questioning. Okay, so let's say you have to solve log x x raised to power 5 dx. Okay, third, let's give you a, so you have to solve these with the help of substitution or preferably by the method of parts. ओके। Okay. And the fourth one is, which you need to solve is, right, so these are the 4 questions we will discuss tomorrow. ठीक है। Okay, or any idea when will you start physics? Physics का मैंने पेपर दे रखा है यार. I have to send you next paper also. I've sent you कल पूरा हो जाएगा। kinematics, units and dimension, integration, derivative, trigonometry I'm holding back, but I'm planning कि मैं trigonometry की आपको जहाँ तक करा रखा है मैंने identities, वो वाली identities तक दे देता हूँ आपको. आपको कल मिल जाएगा रात को। ठीक है. So these are the 4 questions you need to try using integration by parts, and you can also use integration by substitution, but preference is given to integration by parts, ठीक है। क्योंकि 2 प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे. हम्म, ठीक है. ठीक See है। you in the evening.